let's start. Okay, so many things. Okay, let's read these beautiful Baba Ramdev. Health. Ah, yes, yoga. Okay, physical fitness. Correct. Yes, spiritual connection with the divine. Okay, Padma Asan. Oh, nice. Can fit. Exercise. Dia says. Okay, Karthik says discipline. Khushbu says relaxation. Akash says meditation. Yes, right. Spiritual workout. Nice, Keshav. That's a nice word. Workout. Right. Lakshya says ideality. Right. Good. Harshita says healthy body and mind. Amit says different asana. These are such nice thoughts. Praval says focus. Wow. These are so amazing words. I just want you to look all of your answers कि आपने जो अपने आंसर्स दिए हैं उस आंसर पे फोकस बना के रखना और इस आंसर को इस सेशन के एंड में याद रखना कि व्हाट वी हैव थिंक हम क्या सोचते हैं योगा का मतलब क्या है करेक्ट so keep this in mind while we proceed to our session right so we are discussing about yoga and yoga is the science of a spiritual connection. So we are going to discuss about okay, what is this science? What does this science has? And before beginning of anything, we recite some gratitude prayers. So I'm going to recite this gratitude prayer. Why do we recite prayers? हम prayers क्यों recite करते हैं? Because एक चीज क्लियर है कि जो नॉलेज है भगवत गीता की इट इज नॉट ओनली रजिस्टर्ड इन द हेड इट इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ इंटेलेक्ट बट द knowledge of Bhagavad Gita becomes a wisdom for life when it gets deeply deeply stuck in the heart जब ये हमारे हृदय में उतरती है then we are able to feel this knowledge. So therefore, when we recite prayers of gratitude, what happens is this knowledge registers in the heart also, as well as in the intellect. So you can think of your teachers and try to recite in your mind, and let me try to go forward. Om Agyan Timirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. I pay my respectful obeisances unto my spiritual teachers who have opened my eyes, which will blind the darkness of ignorance with the torchlight of knowledge. Dear Lord Krishna, your spiritual teachers, kindly guide us to be present in this moment so that we can become aware of ourselves and deeply imbibe this knowledge in our heart. Okay, thank you. Yes, there is a activity for all of you. तो अब सबके लिए एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है What do you do to relax और इसका आंसर आपको कैसे देना है अनम्यूट करके तो अपना माइक अनम्यूट करके बताइए कि आप रिलैक्स करने के लिए क्या क्या करते हैं व्हाट एक्टिविटीज यू डू दोस्तों से मिलना या खेलना ओके Singing. फ्रेंड्स ओके सिंगिंग और बताइए Nature walking to Listening music. नेचर Sleeping. वॉक ओके नेचर traveling, वॉक म्यूजिक डन सिंगिंग Sketching. कैचिंग playing दैट्स वेरी नाइस क्रिकेट यस वो इंडियन ही क्या जिसे क्रिकेट खेलना नहीं आता
Oh, what? Sleep. Music. Music. Yes, music is there. Yes, correct. Rest. Yes, anything else? Rest. आराम. Food. Okay, sleep, right? So Food. food. Oh, yes, some foodies here. Good, good. Anything else? Yes, yes, बताइए anything else? कुछ और? Sometimes they cry also for getting relaxed. Oh my God, that's something very unique. Okay, crying. Okay. Anything else? I'm wondering, all of you guys are from Walking. The traveling. traveling. Okay, traveling to some, places, good places, maybe nature or maybe some Like popular place. mountains. Mountains. Okay, good, good, good. You guys don't use phones? I'm really surprised to Worship. see this. क्या क्या बताओ? कौन? Worship. आकाश क्या कह रहे हो? Birth क्या? Worship. पूजा. Okay, worship. Okay, some of you might be interested in worshiping. Okay, Watching movies. movies. Thank you for being honest. Right, I am really looking for honest answers. Okay, what is happening with this? Reels. Reels. Oh, this is truth is very much coming out. Don't worry, guys. We are just trying to, be truthful. Reels are there, or movies, or what is The famous these talking days? to friends. Talking to friends. Sometimes friends will say कि कोई नहीं मिला मैं ही मिला खाली. Yes, Yeah, friends is it's there. like gossiping. Gossiping. Okay, gossiping goes on. Oh, oh, oh. Anything else? No one has the Instagram app in their phone. I am very much surprised and shocked. No one uses Instagram. No one uses Netflix. Okay, very pure generation. So we have Already, Instagram. We you do have. use, but it doesn't relax us. Okay, it doesn't relax us, but we do it, right? We go to Instagram Yes, or we do it. okay, okay, thank you. I'm just looking for honest answers. Yes, right, right. Instagram और क्या है? और आजकल क्या क्या फेमस है? Netflix. Netflix, Snapchat. So Snapchat. Snapchat. Snap. ये है आंसर्स, रियल आंसर्स ये हैं, ये पॉपुलर आंसर्स। कैचिंग गॉसिपिंग आप कभी कभार करोगे शायद महीने में एक बार। यूट्यूब शॉर्ट्स, राइट? यही मोस्टली तो यही होती है हमारी लाइफ में, यही पर हमारा सर टाइम ऑफ। इनसे ही तो रिलैक्स करना है। हाँ, यही तो सारे रिलैक्स करने वाले हैं, राइट? ओके, तो एक सर्वे किया गया और वर्ल्ड में देखा गया कि लोग रिलैक्स करने के लिए मोस्टली मोस्टली लोग चार चीजें करते हैं। वो चार चीजें क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। गोइंग ऑन हॉलीडे, so when they have job, what do? Okay, let's go out. Some of you said traveling, some of you said nature walk. Just want to go out, take a break. और अभी आप लोगों को भी तो अच्छा लगा होगा ना कि कॉलेज के अभी खत्म हुए एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, तो अभी घर निकलते हैं। थोड़ा सा हम कुछ दिवाली की छुट्टियां भी हैं, घर पे छठ पूजा है, बहुत कुछ है, सो घर चलते हैं थोड़ा सा, राइट? So the survey found that people take holidays. Next, TV or a movie, right? PVR, okay, let they go to different thing. तो इसमें हम अब ऐड कर देंगे इस जनरेशन के लिए Instagram also, right? Instagram and Snapchat. We will add this to this generation, right? Gen Z generation. Yes. Third, they found that some even take intoxication. Many times when I am coming from the college, and especially from ARSD or various colleges, I have seen students taking intoxication, some of them even smoking. What to speak of boys, even sometimes girls also. So they think that this will also give relax. That's why they are doing, right? That's why this is popular. And the fourth one, इसको कोई beat नहीं कर सकता, right?
कि कुछ भी हो सो जाओ, है ना, बस कुछ भी हो, अगर कुछ समझ में ना आए, जब थके हार के आंखें दर्द करने लगे तब अल्टीमेटली सो जाओ, इससे तो रिलैक्स हो ही जाएंगे हम, है ना। कि अ, ओढ़ रजाई, है ना, सर्दियों में कहते हैं ओढ़ रजाई, कर ले पूरी दिल की आस, मेहनत पे क्या है भरोसा, रब करेगा ना पास, राइट। एग्जाम आए तो रब करेगा पास, है ना, अब क्या कितना पढ़ जा से ज्यादा। ओह यस, सो एक सर्वे में देखा गया कि ये चार चीजें जो हैं, दीज फोर थिंग्स, दीज आर द मोस्ट कॉमन थिंग विच पीपल डू टू रिलैक्स। नाउ the question comes here. Now you have to think. Bhagavad Gita means thinking. Now, can you see in all these four things there is something common? क्या आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं व्हाट्स कॉमन इन दिस these four things? Sir, it distracts our mind. Okay, they have a negative effect, undoubtedly. Yes. Anything else? These These distract. things gives of comfort. Hmm? Yes, comfort क्या? Sir, these things gives us comfort. That's why we do Okay, them. they are supposedly to be giving comfort, Temporary pleasure. temporary Temporary pleasure, comfort. temporary pleasure. Okay, yes. Anything else? और कोई किसी का ऑब्जर्वेशन? Bad addiction. Bad addiction, yes. Sometimes you can get addicted to intoxications or movies or binge watching, right? Or even sleeping too much. Yes, correct. They are temporary forms to relax your body and mind. They are temporary forms. Yes, yes, yes. So there is one very important thing in common between all these, which is related to our session today. That's why I'm discussing this question. If you carefully look, all these four things are a kind of escapism. All these four things, we are trying to escape the reality of this world, है ना, कि कम से कम भूल जाएंगे. Why people take intoxication? So that they can forget, right? एक बार पूछा गया कि हिस्ट्री वर्ल्ड की सबसे पावरफुल चीज क्या है, तो एक लड़के ने जवाब करके हाथ में खड़ा होकर क्या बोला, अंबुजा सीमेंट, राइट। देन दूसरे लड़के ने हाथ खड़ा होकर बोला अंबुजा सीमेंट से भी पावरफुल चीज एक और है, क्या, ऐसी चीज जिसे पीने के बाद अंबुजा सीमेंट भी हिलता हुआ नजर आ सकता है. So you got it, right? Intoxication. So it is a kind of escaping the reality. Why do we watch a movie? To learn? Why do we watch a web series? To learn? No. It's a kind of escapism. It's a kind of escaping the reality of this world. You just want to forget everything what's going in the life, right? People take holidays after 5 days of work in a job. Why? Because it created so much pressure that when we go to holiday, we expect finally we will be able to escape this busy, this burdening schedule of work, of college assignments, right? You agree with me in this or not? You agree with this? Yes, sir. So, inherent with all of us, it means that we all are trying to disconnect from this world. That's why we are escaping. There is a desire within us to disconnect from this world. That's why we are looking for happiness while relaxing, and we are trying the methods to disconnect. A famous writer and author, C.S. Lewis. Okay, I would like someone to unmute and read this.
Okay, Amit, can you read this? Sir. इसको पढ़िए, ये जो कोट है C.S. Lewis, what does he say? अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट. Unmute if there is an option coming for you to unmute yourself. Sir, may I? Yes. Now, Amit, you can try. I have many things. Yes. Yes, if I find within myself desire which no experience of this world can fulfill, I must conclude I was made for another world. So it's very interesting कि C.S. Lewis क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी डिजायर्स हैं जो वर्ल्ड का कोई भी एक्सपीरियंस, राइट, which no experience of this world is able to fulfill, then it means I was made for another world. I was made for another world. If you look at closely, ये जो चारों चीजें हम करते हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए, all of you said that they are temporary ways of relaxing. They don't give permanent solution, right? Because after you go on a holiday, the holiday ends. After you watch a TV or a movie, you again have to come back. After you take intoxication, you try to go high, then again you come down low. You know, in corporate, when I was working as a software engineer in Oracle, the most visited place in our office was the area of coffee machine, where there is coffee machine and you can get unlimited amount of coffee for free. And what is the effect of coffee? It takes you high. It helps you to overcome sleep. But the effect of caffeine in the coffee is that it takes you high and then it again, after some times, takes you back to the low. And when it takes you to the low, you lose your energy. You again find yourself very drowsy and lousy. So it ends. Sleep. No one wants to come out of sleep, right? The mind says, बस 2 मिनट और, अभी तो सिर्फ सुबह के 6:30 बजे हैं, 6:30 हुए हैं, 6:35 से पक्का उठना है, बस 5 मिनट, कुछ नहीं बदलेगा. Eventually you have to come out of the sleep because you found that the teacher will make your sleep go away. He won't give you attendance, right? So you have to approach the class timely. All of this is trying to give us a very powerful message that there is a desire in all of us to disconnect and to connect with something else. We want to, we have a desire to connect with something higher. And all these four things, they are not able to give a permanent thing. So, you know, if I come here and teach Bhagavad Gita, someone may ask, I don't want to learn Bhagavad Gita. I don't even want to learn yoga. I'm quite satisfied. I'm quite there. But even if you say that you don't want to learn Bhagavad Gita or you don't want to learn this wisdom, a powerful message of wisdom, still you are trying the ways of disconnecting. Every person in this world is trying to disconnect and to connect with something higher. There is a process he is trying to find. So, in other words, all of you, all of us 27 participants in this call, we might not have read Bhagavad Gita, but we are trying to find the yoga, the connection. We are trying to disconnect and to connect with something higher. How many of you understood this message? If you can give a reaction. Good, good. 2, 3, 4. Okay, thank you. Thank you so much. Therefore, we are discussing about yoga.
Everyone is trying for yoga, but there is something very, you can say, बहुत दुखद स्थिति है आज योगा की. Do you know, and all of you can react to this fact also. Do you know the yoga is today a very rich industry in this world in terms of business? The yoga is a $60,000 industry today. आज योगा की वैल्यू क्या है? अगर आप योगा को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, it is a $60,000 industry. You can be a billionaire if you can invent a business out of yoga. It is so popular today, right? And there is so much going in the name of yoga, which is not yoga. Many of you said in your reactions or in your chats, when I asked you what is yoga or what thought comes in your mind, you said peaceful mind, healthy mind, right? And to find how to make it healthy, to find this peace, the ways to disconnect are so much. जो आप देखोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे. चलो देखते हैं क्या वो तरीके हैं. तो अमेरिका में सबसे फेमस योगा आपको क्या लगता है कैसा योगा है? What do you think? Because it is a $60,000 industry. What do you think? What do people do? Can you unmute and say? कुछ बता सकते हैं? Physical workout. Physical workout. Anything else? Some What? meditation. Meditation. Now just see what is going in the name of yoga. So this is a definition of yoga which I discussed, right? Yoga means to connect with something higher. Yoga word comes from word yuj. The dhatu in Sanskrit is yuj, and yuj means union, right? So yoga means union, to connect with divinity, to connect with God. That is actually yoga. The real purpose of yoga is to connect with God, right? Okay. Keshav, can you read this definition for yoga for all of us? If you can unmute. Which aims to create union between body, mind, and spirit, and ultimately between the individual self and the supreme person. Yes, so it is a practice to create union between the body. So yoga involves body, correct? The mind, yes, but yoga ultimately involves the spirit. Spirit, who is spirit? The self, the soul, and the supreme person. The soul belongs to which person? The supreme person. So yoga in very simple sense means to connect with God, to connect with the supreme person by aligning the body, mind, and spirit. But in America or in many countries, in the name of yoga, they have a distorted version of yoga. And just see what is there. This is called as beer yoga. And if you can Google it out, and you can see what they are doing, they are drinking beer and doing some postures and thinking that this is giving peace to the mind. Yes, मन को अच्छा लग रहा है. Is this yoga? What do you think? Is this yoga? Is this yoga? No, sir. But this is a popular industry, right? People are doing beer yoga and it appears so silly to us, right? Okay, next I'm going to show something which is very, very interesting. You might have not imagined this कि सर योगा में ऐसा भी होता है कुछ, ऐसा भी चल रहा है कुछ. Just see. Next. Can you tell me what is going on here? यहाँ पे क्या हो रहा है?
इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इस फोटो में आपको क्या पता लग रहा है? क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? अनम्यूट करके बता सकता है इस फोटो में आपको क्या ऑब्जर्व? इंसान जानवर बना Goat हुआ है। standing on people. यस, गोट्स, बकरियां, एंड गोट्स आर स्टैंडिंग ऑन पीपल्स बैक, राइट? एंड इट इज बीइंग क्लेम्ड, ऐसा क्या बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको पैसे देने हैं, आपको हमारे योगा क्लब में ज्वाइन करना है, और होगा क्या कि आपको ऐसे बेंड होना है, और आपकी पीठ पे हम बकरियों को चलवाएंगे। एंड जब बकरियां कदम रखेंगी अपने अपने, द गोट्स व्हेन दे विल स्टेप ऑन टू योर शोल्डर्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाह, कितना सॉफ्ट है, आ हा हा, कितना आनंद आ रहा है, आ हा हा। This is this is $1 billion industry in America, and it is called as goat yoga. This is goat yoga, right? So much going in the name of yoga, and yoga has lost its sense. This is not yoga. This is definitely not yoga, but this is popular. Therefore, actually, no one knows what is yoga because they are not finding the root of origin. Where does yoga come from? Where it is mentioned, the source, इसका source है क्या योगा का? They have not found out, therefore they are inventing their own way of yoga. Goat yoga, bear yoga, and so much yoga. It is actually not yoga, and it's so laughable matter. It's really so pathetic. So the yoga is mentioned in the oldest scriptures, which are called as the Vedas. The Vedas mention about the yoga. And अभी आपके स्क्रीन में जो प्रेजेंटेड है, ये है एंटायर वैदिक लिटरेचर। पूरी वैदिक लिटरेचर को हम अगर प्रेजेंट करना चाहें तो हम उसे इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, ये चार्ट पूरी वैदिक लिटरेचर को दिखा रहा है। And if I just make you observe some crucial things, very important things, तो यहाँ पे आ रहे हैं आपके वेदास, द फोर वेदास, द ऋग वेदा, यजुर्वेदा, साम वेदा एंड अथर्ववेदा, एंड एवरी वेदा इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शंस। तो वेद इज नॉट वन बुक। ऋग्वेद एक बुक है, यजुर्वेद दूसरी बुक है, सामवेद तीसरी बुक है, अथर्ववेद चौथी बुक है। चार बुक मैंने पढ़ ली सर, मैंने वेद पढ़ ली? नहीं, ये तो आपने अभी एक वेद के कुछ हिस्से पढ़े हैं। वेदास के चार सेक्शन हैं, संहितास, ब्राह्मणास, आरण्यक, उपनिषद। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज उपवेदा। You can see here Upaveda, and Upaveda consists of Ayurveda, Dhanurveda, many things like this, right? Then there is Vedanga. To study the Vedas, you need to understand six kinds of things. And it is said that इन छह को पढ़ने और समझने के लिए कितने साल लगते हैं? 15 years. It requires 15 years to understand the Vyakarana, which is the grammar, the Nirukta, the etymology, the Chandas, the meters in which you have to recite the verses of Vedas, the Shiksha, the pronunciation, Kalpa, the ritual details, and astrology, Jyotisha. It will take 15 years minimum for a person to understand the six basic requirements to read the Vedas. And then you can enter to learn the Vedas. तब आप शुरू कर सकते हैं उनको पढ़ने के लिए. Just like if you want to read a science book, you have to understand the language English, जिसमें आपकी एनसीईआरटी लिखी हुई है इंग्लिश लैंग्वेज में। और इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखने के लिए आपको क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए? द अल्फाबेट्स, द बेसिक ग्रामर। Similarly, it's very difficult to read the Vedas. And in the Vedas, you can see there is something called as itihasa, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, itihasa. Itihasa means it comes from the word iti has. Has means
happening, the happenings, and iti means thus. तो जिस समय, the happenings which happened in the past. So itihas basically consists of Ramayana and the Mahabharata. And in the Mahabharata, the most important thing in Mahabharata is, can anyone guess? Which is the most important thing in Mahabharata? Verses of Krishna. Yes, Bhagavad Gita, which is termed as the jewel, the diamond of Mahabharata. It is said that the whole Mahabharata is presented so that anyone can come to the knowledge of Bhagavad Gita. So, the book which is meant for understanding yoga and which has been used by sages करोड़ों सालों से, many more than 5,000 years ago, people had referred to Bhagavad Gita for understanding of the yoga. And even if I tell you, the whole purpose of Vedas is one. There are so many books, so many literatures, but the aim is one. लक्ष्य एक है ना? हमारे क्लास में भी बहुत सारे लक्ष्य हैं अभी राइट नाउ पार्टिसिपेंट्स में, राइट? तो लक्ष्य एक है, वो क्या है? योगा, टू कनेक्ट विथ डिविनिटी, टू कनेक्ट विथ गॉड, टू कनेक्ट विथ द सुप्रीम पर्सन. एंड इंटरेस्टिंगली आज के टाइम पे जो योगा बचा है, जो अंडरस्टैंडिंग बची है, वो बची है इसका एक छोटा सा पार्ट जो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में, ये विच इज अ पार्ट ऑफ पतंजलि योगा. पतंजलि एक ब्रांड भी है, नो डाउट, बाबा रामदेव का, बट ओरिजिनली पतंजलि एक ऋषि का नाम है, एक सेंट का नाम है, एक सेज का नाम है, who has written one system of yoga. Patanjali has given one way of yoga. It's not all the way of yoga in all. It's only one way of yoga, which is presented by Patanjali. And in Bhagavad Gita, all the varieties of yoga are covered. Even Patanjali yoga is also covered in Bhagavad Gita, if you know the 6th chapter of Bhagavad Gita. So everywhere in this world, even Baba Ramdev जो सिखाते हैं, वो क्या सिखाते हैं? पतंजलि योग का छोटा सा हिस्सा. और अगर मैं आज आपको बताऊं पतंजलि योग में क्या है ब्रीफ पे, तो आप देख सकते हैं that Patanjali yoga has yoga sutras and it is known as Ashtanga yoga. It is known as Ashtanga yoga because it has 8 steps. Ashtanga means word 8. It is a Sanskrit word for 8. So एक ऐसा सिस्टम योग का जिसमें 8 स्टेप्स यूज किए जाते हैं और वो पर्पस क्या है? टू कनेक्ट. what happened? Okay, next screen share. Okay, to connect with, sorry for this, some technical error always come. मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, some technical things come up. To connect, what is happening here? Just give me a second. To connect with divinity. Okay, let's go with this. So I think it's not allowing me. Maybe Krishna's desire is this. Okay, तो बेसिकली अष्टांग योग में 8 स्टेप्स हैं भगवान से कनेक्ट करने के लिए, राइट? 8 स्टेप्स. और ये एक सिस्टम है योगा का, ये ऑल इन ऑल योगा नहीं है. ये अष्टांग योग बहुत सारे योग में से एक योगा है. एंड भगवत गीता में जो कृष्णा डिस्कस कर रहे हैं
वो सारे योगा सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं, एंड अष्टांग योग भी डिस्कस्ड है. And Krishna says that in Bhagavad Gita, there are mainly three main yogas. What are those three? The first Krishna mentions about Karma Yoga. Karma Yoga tells about how to live in this world. Then in the middle six chapters, this is first to six chapters of Bhagavad Gita, or middle six chapters mention about Bhakti Yoga, जो आपने सुना होगा बहुत बार. 7 to 12 chapters, they talk about Bhakti Yoga. And Bhakti Yoga basically talks about how to love God. And then the last six chapters mention about Gyan Yoga, right? Gyan Yoga, which is 13 to 18 chapter. And this talks mainly about how to live, how to love, but finally how to leave this world. The knowledge, the wisdom, which may help us to remain focused in how to properly live. This is Bhagavad Gita, if I say you. Yeah? Live, how to live in this world in a way which you can connect with God, then how to love, how to ultimately love that person, how to revive the relationship with that person, and finally how to live without any distraction, without any, going in hodgepodge way, finally. So Krishna covers all the main yogas here, and Patanjali covers only one part of the yoga. This is the beauty of Bhagavad Gita. You get everything there. इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा भगवत गीता में सारे सवालों के जवाब हैं, because it covers all the topics. In briefly, I'm going to give you about Ashtang Yoga. Pravel says, what is the last yoga? The last yoga is Jnana Yoga. ये J और N वर्ड लिखा है जो मैंने, ये J N का मतलब क्या है? ज्ञान योगा, राइट? द योगा ऑफ विजडम. ये आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ये अभी जस्ट मैं आपको प्रेजेंट करूंगा. अष्टांग योगा बेसिकली है क्या, अगर हम देखें, डिस्कस करें. अष्टांग योगा बेसिकली टॉक्स अबाउट यम एंड नियम. यम नियम क्या होता है? दीज आर अ वे ऑफ रेगुलेटेड लाइफ. क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे लाइफस्टाइल बिताना है. एब्स्टिनेंसेस मींस व्हाट नॉट टू डू, एंड नियम मींस व्हाट टू डू. ठीक है. देन कम्स asana and pranayam. That means the postures and the breathing exercise. Today in this world, the only form remaining of ashtang yoga is this. लोग अष्टांग योग में सिर्फ ये दो चीजें जानते हैं आज, आसन और प्राणायाम, बस. But they don't know actually ashtang yoga consists of 8 steps. Yam means abstinences. Abstinences means, okay, what not to do. क्या नहीं करना. For example, in Ashtanga Yoga, you have to sleep when the sun sets. And observing means what to do. Observe करना मतलब क्या करना है. The do's, like you have to rise before sunrise. Then comes pratyahar, dharana. When you are able to maintain this lifestyle, when you are able to maintain the asana and pranayam, that means you are able to align the body. Then comes the role of mind, pratyahar, dharana, and finally dhyan and samadhi. And just see, the world is only having knowledge about these 2 steps. Therefore, what the world is thinking about yoga is an actually incomplete understanding of yoga. It's an incomplete understanding. और ये 8 के 8 स्टेप्स आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं?
ये 8 के 8 स्टेप्स आपको बेसिकली दे आर हेल्पिंग यू टू डेवलप द प्योरिटी, डेवलप द प्योरिटी टू कनेक्ट विथ गॉड. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. जब मैंने पहली बार अष्टांग योग पढ़ा था ना, और जब मैं इस सेक्शन के थ्रू गुजर रहा था, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया. बताओ क्या क्वेश्चन आया था? डू यू वांट टू नो? ओके. ओके ठीक है. तो मैंने सब सोचा, बहुत लॉजिक सा क्वेश्चन. ओके, व्हाट डज योगा मीन्स? टू कनेक्ट, टू कनेक्ट विद गॉड. अगर गॉड ने अल्टीमेट एम बनाया है, भगवान ने अल्टीमेट एम रखा है कि हम उनसे कनेक्ट करें, जो कि अभी हम नहीं है, उनसे हम कनेक्टेड अभी नहीं है, राइट? तो इतना मुश्किल प्रोसेस क्यों रखा है? अगर वो चाहते हैं कि हमें करना है तो इतनी मुश्किल तरीके से क्यों? मतलब भगवान ने पूरी दुनिया में इंसान को इसलिए भेजा है क्या कि वो अपने पैर ऊपर करे, उल्टा लटके, और उल्टे लटक कर आसन प्राणायाम करके ध्यान समाधि तक पहुंच के तब जाके वो भगवान से कनेक्ट करे? व्हाई सो डिफिकल्ट? What's the main purpose? If this difficult yoga system is there, then no one will be able to connect with God. ऐसा मुश्किल सा तरीका है ही क्यों? उल्टा लटक के भगवान से क्यों कनेक्ट होना? राइट? इट्स वेरी लॉजिकल कि भगवान से जब तक उल्टा नहीं लटकेंगे आप, तब तक आप भगवान से कनेक्ट नहीं कर सकते सर. अरे ये क्या बात है? उल्टा लटकना है, प्रत्याहार धारणा, राइट? मन को कंसंट्रेट करना है. तो फिर मन है ही क्यों ऐसा जब उसे कंसंट्रेट करवाना था? तो देयर इज अ मिसिंग लिंक. द अष्टांग योगा इज ओनली द अष्टांग योगा. Therefore, the Bhagavad Gita says the Ashtanga Yoga is only a preparation. It prepares you. Therefore, I use the word Ashtanga Yoga helps to develop only purity. This is a step. ये वो सीढ़ी है जो आपको आगे की जर्नी पे ले जाएगी. After samadhi, then you are ready to finally connect with God. But it's not the end. It's not the end. It's a preparation. Just like एग्जाम से पहले आपको क्या करने हैं? बहुत सारे बुक्स पढ़नी है. इट्स अ प्रिपरेशन. बट यू हैव टू राइट इन एग्जाम, यू हैव टू थिंक इन एग्जाम, you have to ultimately be creative in the exam. Similarly, Ashtanga Yoga develops you the purity. क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आसन प्राणायाम करके आपका माइंड थोड़ा पीसफुल हो गया. अब आप तैयार हो गए. अब तैयार हो गए. लेकिन अब तैयार हो गए तो मतलब अब सब इनएक्टिव हो जाएगा? नहीं, अभी तो खेल शुरू होगा. अब आप वो स्टेप्स करने के लिए रेडी हो गए जिनसे आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, पहला स्टेप क्या होगा भगवान से कनेक्ट करने के लिए? भगवान को जानना कि भगवान है कौन, कनेक्ट किससे होना है, क्यों होना है, राइट? Therefore, the aim of Bhagavad Gita is the central theme. It's the central theme, that is Bhakti Yoga. Ultimately, we are looking for love. Everyone is looking for love. Without love, no one can exist. It is said that in this world, everyone wants to love and be loved. हर कोई क्या चाहता है? To love others and to be loved by the others. This is the ultimate aim of the heart, beyond the body and the mind. This is the desire of the soul. Therefore, in essence, Ashtanga Yoga will help you to reach the conclusion of Bhakti Yoga.
इट विल गिव यू द प्योरिटी। बट जो हम करते हैं, सोचते हैं कि ये योगा है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में आप सबने देखा होगा, है ना? तो हम सब क्या करते हैं, हम पोस्चर्स बनाते हैं और हम प्राणायाम करते हैं। तो क्या ये योगा है? ये योगा के सिर्फ 2 स्टेप, ये ऑल इन ऑल योगा नहीं है। जस्ट लाइक आई शोड यू, दिस इज नॉट योगा गोट योगा, दिस इज नॉट योगा बियर योगा, दिस इज nowhere नियर टू योगा। सिमिलरली, प्रैक्टिसिंग द 8 स्टेप्स और उस 8 में से भी सिर्फ 2 स्टेप्स, दिस इज नॉट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा। और जहां पे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहां पे क्या है? वहां पे योगा का एम अचीव नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू लव गॉड विदाउट एक्चुअली कमिंग टू द कंक्लूजन। तो आप में से जिसका भी वीडियो ऑन हो, तो वीडियो ऑन कर सकते हैं एक बार। लेट मी सी। यस स्टूडेंट्स, यू कैन टर्न ऑन योर वीडियोस। मैं देख सकता हूँ कि आप, यस शुभम इज देयर। ओके शुभम, तो वेयर इज माय स्क्रीन? मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. तो यू रीड योगा इज लेस अबाउट, ठीक है? ठीक है, आपको करना है रीड योगा इज लेस अबाउट, एंड आई विल बी टेलिंग मोर अबाउट। I will be Okay, taking sir. up the questions also, my dear friends, my dear students. I will be able to take the questions also. Okay, so let me just finish this section. Okay, yes, read. Yoga is less about. Relaxing your body. Everyone said ultimately yoga करते किसमें? रिलैक्स करने के लिए। But actually में yoga is more about awakening your spirituality. It means it is meant to awaken your true nature, your true, what we call as true identity, that you are beyond the body and the mind, right? Our first session was therefore rediscovering, क्या था? Rediscovering our, anyone remembers? Identity. Identity, yes, rediscovering our identity. Yoga is less about, Shubham, you can continue. Looking good on the outside. यस, जनरली योगा के बारे में क्या सोचते हैं कि आप फिट हो सको, अच्छे दिख सको। जिम इज ओनली अबाउट 6 पैक एब्स और आपके सनी देओल जैसे डोले, राइट? बट योगा इज मोर अबाउट एक्सपीरियंसिंग डिविनिटी ऑन द इनसाइड। दैट इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ योगा। योगा इज लेस अबाउट, यस शुभम, Connecting head to toes. है ना? जब आप अपने हाथों को अपने पैरों तक पहुंचा सकते हो, क्या सिर्फ योगा यहीं तक सीमित है? Yoga is more about connecting the soul to supreme. That is the essence. Yoga is less about, Flipping your body upside down. yes, but yoga is more about balancing mind when life turns around. Yoga is not only limited to the body, but beyond the body, the mind, and ultimately beyond the mind also, which is connecting the soul. Yoga is less about, Avoiding material disease. you know the person, Baba Ramdev, right? Patanjali, now products खाते हैं. But yoga is more about cleaning of material desires, not just material diseases, but material desires. Ultimately, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? Because we do not have controlled desires, right? Yoga is less about, Enjoying the world. ये बहुत इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली योगा करके करना क्या है? अच्छी बॉडी, अच्छी हेल्थ, पीसफुल माइंड रख के कर क्या रहे हैं? अल्टीमेटली वापस से वही कर रहे हैं।
वापस से वही कर रहे हैं। बाबा रामदेव के यहाँ योगा का सेशन 1 महीना अटेंड करके या हरिद्वार में जाके क्या कर रहे हैं, वापस आके वही कर रहे हैं। क्योंकि लिवर खराब हुआ था, राइट, बिकॉज ऑफ द ड्रिंकिंग हैबिट, लिवर सिरोसिस हो गया। फिर 1 महीने हरिद्वार गए, वहां जाके आपने क्या किया, आपने पंचांग योगा किया, आपने कुछ करवाया, राइट, एंड यू अगेन केम बैक टू स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन, right? Enjoying the world, it is not the yoga, it is less about enjoying the world, it is more about serving the world. When you connect with your soul, when you connect your soul to God, then you are trying to serve others, to improve others lives, to contribute to others lives. That is yoga. When you are connected with God, this is the main theme, my dear friends. तो क्या आप देख सकते हो कि how people are today so much away from the real understanding of yoga. योगा की अंडरस्टैंडिंग से कई कोस कोस दूर हैं, राइट। हमें जनरली बताया जाता है योगा यही होता है। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज नोवेयर इट इज टॉट अबाउट भगवद गीता। क्योंकि भगवद गीता हमें नहीं पढ़ाई जाती और उसको प्रैक्टिस करना भी नहीं सिखाया जाता, तो हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। देयरफॉर हमारे कोर्स का नाम क्या है? कंसेप्ट्स ऑफ भगवद गीता। कि वो कंसेप्ट्स अगर आपके लाइफ में हैं, तो यू नीड नॉट टू बिकम अ मंक और गो टू अ माउंटेन केव और हिमालयास। यू कैन बी इन योर सिचुएशन एंड अप्लाई दोज कंसेप्ट्स एंड अचीव द पर्पस ऑफ योगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ भगवद गीता। Therefore, Ashtang Yoga, जो कि 8 steps में है, Krishna mentions that it is divided in 3 main yogas. Let's leave this. ये है भगवद गीता, my dear friends. मैंने कहा ना आपको, भगवद गीता is the book about yoga. तो भगवद गीता के पहले 6 chapters, which is basically talking about कर्म योगा, and every chapter is named as a yoga. Can you see? हर चैप्टर के नाम में क्या है? एक word common, yoga. Therefore, Bhagavad Gita is a book about yoga. The first chapter is Arjuna Vishad Yoga, the yoga of dejection. Then the second chapter is the yoga of analysis, Sankhya Yoga. Then yoga of action, yoga of knowledge, renunciation and meditation. और ये पूरी कैटेगरी किस लिए बता रही है आपको? How to live in this world. Live in this world where you can be contributing, serving without attachments, without the without the without the non-peaceful distracted mind. The next 6 chapters of Bhagavad Gita, they are basically talking about these 3 main sections. Let me just write it down. ये जो है, ये basically they talks about the Bhakti Yoga, which is basically how to finally love God. If you know how to live, but ultimately you want to love that person for whom you are living. You want to love that person whom you belong to. You are a soul. You belong to whom? You belong to someone. You belong to someone. You belong to that supreme person. And the last 6 chapters, they are also part of yoga, which talks about how to live after this life, how to live and finally attain that destination, right? The destination where C.S. Lewis was talking about. C.S. Lewis was saying that we are made for another world. This world is not all in all. We are looking for that world actually, where everything is permanent, where everything is fully conscious, where everything is full of bliss. That world. So, my dear friends, I talked about the basics of Bhagavad Gita. So, you can summarize this Bhagavad Gita, and a famous author gives a very nice example that Bhagavad Gita can be compared like a jewel box. एक jewel box. तो jewel box में ये जो lid है, ये जो covering है ना, ये lid क्या है?
आपका बेसिकली ये द योगा ऑफ एक्शन, दैट इज कर्म योगा, योगा ऑफ सक्सेस, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। सक्सेसफुल का मतलब क्या है? ये आपकी सीईओ वाली सक्सेस नहीं है, ये फील्ड सक्सेस नहीं है, ये वो सक्सेस है जहां पे आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो। ये उस सक्सेस की बात कर रहे हैं भगवद गीता में, राइट। एंड जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं वो इस ज्यूल बॉक्स का बेस है, वो इस ज्यूल बॉक्स का बेस है। वो क्या है? योगा ऑफ विजडम, दैट इज ज्ञान योगा। लेकिन ज्यूल बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ज्यूल बॉक्स में? The jewel itself. यस, ये रिंग, डायमंड की रिंग है ना, सोने की अंगूठी। सारे पैसे किसके दिए हैं? इसी के तो दिए हैं। बॉक्स की थोड़ी ना कीमत है इतनी जितनी रिंग की है। तो भगवत गीता में बेसिकली दिस इज द मेन ज्यूल, द मेन डायमंड, द योगा ऑफ लव, द भक्ति योगा। दिस इज द एसेंस ऑफ योगा, दैट इज कनेक्टिंग with God, connecting with God. This is the essence of yoga. So one very famous writer, the name of the writer जिसने ये analogy दी है, बहुत अच्छी analogy है, is विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। Vishwanath Chakravarti Thakur, he gives a beautiful analogy of that you can compare the Bhagavad Gita के 18 chapters को, जिसमें से पहले 6 chapters हो गए yoga of success, everyone is looking for success, right? But beyond success, everyone is looking for love, which is 7 to 12 chapter, and the last 6 chapters, that is 13 to 18 chapters, which is the yoga of wisdom. All these 3 yoga, they basically have one aim, which is to connect with God. We are reconnecting ourselves. We have lost something, now we are reconnecting. इसे कहते हैं भगवद गीता में योगा लैडर, राइट? योगा लैडर। एंड वी आर गोइंग टू जस्ट एंड दिस आफ्टर दिस। तो कर्म योगा का आप सबने सुना हुआ है, कर्म करो अपना, है ना, अपनी ड्यूटी करो। सबका मानना कर्म योगा मतलब क्या होता है? अपनी ड्यूटी करो। बट इट्स नॉट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। कर्म योगा मीन्स there is a essence of, there is an element of detachment, that there is no attachment with it what you do. There is a sense of detachment. And in Gyan Yoga, there is a sense of detachment, but there is a sense of knowledge also. Okay, why I have to do this? किसके लिए करना है all this work? क्या लाइफ बस खाली 9 to 5 की जॉब है? और आप स्टूडेंट्स के लिए क्या लाइफ खाली 8 to maybe 4 PM तक के लिए कॉलेज के आवर्स हैं? फिर घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, मूवी देखो। क्या लाइफ इसीलिए बनी है? नो, देयर इज अ नॉलेज ऑफ सोल, देयर इज अ नॉलेज ऑफ गॉड, देयर इज अ नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड देयर इज अ नॉलेज ऑफ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, दैट इज ज्ञान योगा. And then comes dhyana yoga, where there is an element of detachment, there is an element of knowledge, but there is also an element of meditation, that you are connecting also, trying to do the meditation also. But on the yoga ladder, the topmost yoga which is placed in Bhagavad Gita is bhakti yoga, because not just detachment from your duties, you are not only non-attached, you don't only have the knowledge, you also do the meditation, but you have the essence, which is ultimately you are trying to find the love. You're trying to find love with God, the main essence of yoga. Therefore, in essence, the yoga talked about in Bhagavad Gita is mentioned like this as yoga ladder. Like one can progress. Krishna is giving the option. You can progress in this way. You, if you can start to become detached. Detached doesn't mean that you don't do your duty, you don't study for exams, you don't do your job.
It just means that you don't get affected by it, you don't get consumed by it. And then in Jnana Yoga, you develop some knowledge also about your spiritual identity. You are beyond this body and the senses. Then in Dhyana Yoga, you also do some meditation. You try to connect your mind and your identity. They say, yeah, before you enter the 9 a.m. reality with the world, you must connect your identity. Connect your identity at 5 a.m. before you enter the 9 a.m. reality of the world. And ultimately, it's all about love. सारे सॉन्ग्स किसके ऊपर होते हैं? लव. सारे गाने किसके ऊपर होते हैं? लव. सारे रिश्ते नाते किसके ऊपर होते हैं? लव. एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव. देयरफॉर बहुत फेमस सेइंग है क्या? एवरीवन इन लाइफ is looking for right thing. That is, they are trying to find love, but in wrong place. They are looking for love, but in wrong place. They are looking for love, but imposing it in wrong person. They are thinking that the other person is the body, but he is beyond the body. They have no knowledge about God. Therefore, ultimately, it's about love, right? We discussed the yoga ladder. And thank you very much for taking this time to understand about yoga. This was all in all about yoga, what basically Bhagavad Gita wants to mention, what basically Bhagavad Gita is trying to give you the idea of yoga. And before I take out the time, I have very important announcement. Very, very important announcement. Many of you came in our one-day trip, right? One-day outing, right? For boys, we had a one-day outing, and I hope some of you were there, but many of you were not there, right? And keep your questions also. I know many of you had questions also. I will take up the questions also. Just 1 minute announcement. But right now, we are launching a special 2-day camp for the boys outside of Delhi. We are trying to give you a beautiful experience to you. And believe me, हम concepts learn करने किस book के, कौन सी book के learn कर रहे हैं हम concepts? Can anyone unmute and tell me? कौन सी book? Gita. Bhagavad Gita. And where was the Bhagavad Gita spoken? Where was it Kurukshetra. spoken? Kurukshetra, spot on. So we are planning to take you, my dear boys. Yes, we are trying to take you to take you to Kurukshetra. So right now, my dear friend Kinshok, he will be posting something in the boys group, and that camp, register for that camp, and the dates are 30th November, right? From 30th to 1. गर्ल्स के लिए जो है वो गर्ल्स के ग्रुप में जो भी चीजें प्लान्ड हैं वो आएंगी, राइट? But for boys it will be outing, and we'll definitely, you will have great experience learning in Kurukshetra. We will be visiting many places. There are so many things, and Bhagavad Gita जहाँ पे बोली गई है, that place I will also take you. उस जगह पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा जहाँ पे उस पेड़ के पास जहाँ पे भगवद गीता बोली गई है. So this is a very important and very beautiful opportunity. In my college days, I never missed a camp. Just one camp which I regret missing. But don't miss this opportunity, please. Don't miss this opportunity. And also, हम आपके लिए एक चीज कर रहे हैं, which is to help you to do the meditation for your life. मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए? चलो ये बताओ, मेडिटेशन करने का बेनिफिट क्या है? कोई बता सकता है? मेडिटेशन करेंगे तो क्या मिलेगा?
इससे बढ़िया हम असाइनमेंट ना बना लें या कुछ और ना कर लें, मेडिटेशन करने से क्या है? पीस, ओके, लक्ष्मी says पीस, यस, एनीथिंग एल्स? Focus. Focus, mind control, yes, health, okay. Now you understood Ashtanga Yoga, so I hope you know that yoga is beyond health, meditation is beyond health and body, right? Right. And even mind also. Purity, Keshav says purity, yes. Ultimately, yoga is to connect. Ayurveda, thank you for your answers, helping us in connecting ourselves with our inner soul. Thank you. आयुर्वेदा, ये दो एनालॉजीज अपनी लाइफ में याद रखना, ठीक है? ओके, मैं आपको आज मेरे पास, आज मेरा ड्रॉ करने का बहुत मूड है, तो मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, है ना? आपको मजा आएगा। Just give me a second, आज ड्रॉ करके बताते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड? Okay, let me share the entire screen. I'll provide you the PDF also if you want, right? Of this today's session. So you can revisit the knowledge and churn it. So according to Ayurveda, you know, if this is our stomach, I know it's not a good shaped stomach, but it's the stomach. Just assume this is your belly, right? So according to Ayurveda, the stomach has 4 sections. I think you can avoid, my dear friends, to write something in screen is being written. ठीक है, स्क्रीन से थोड़ा सा हाथ रखें दूर, ताकि हम ये एग्जांपल कर सकें जल्दी से डिस्कस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, द टू पार्ट्स ऑफ द स्टमक शुड बी फिल्ड विथ सॉलिड फूड। आप लोग खाना खाएंगे ना अभी, तो टू पार्ट्स ऑफ द स्टमक शुड बी फिल्ड विथ सॉलिड फूड। आप जो खाना खाएं वो 2/4 हिस्सा खाएं जो सॉलिड से भरा हो। द 3/4, यानी जो थर्ड पार्ट ऑफ द स्टमक है, दैट शुड बी फिल्ड विद द लिक्विड, स्पेशली वाटर। नाउ आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, आप में से कोई गेस करके बता सकता है वो फोर्थ पार्ट जो है, ये इसमें क्या भरा होना चाहिए हमारे स्टमक में, एक हेल्दी बॉडी के लिए? कोई बता सकता है? गेस, एनी गेस, गेस मारो, एनी गेस? It गेस should मार। be empty, I guess. Yes, correct, correct, correct. Thank you. The fourth part should be filled with only air. कुछ नहीं डालना चाहिए. Why? Ayurveda says this air will help you to generate the fire of digestion. When the food is broken down into smaller molecules, the energy, the heat, this requires air. अब मुझे बताओ, हेल्दी बॉडी के लिए 2/4 सॉलिड जरूरी है, 1/4 लिक्विड जरूरी है, या 1/4 एयर जरूरी है? क्या जरूरी है? All three. All three. Yes, this is a balanced diet. So am I coming here teaching you spirituality and saying leave your studies, leave everything? No. Just like you take solid food, do your duties, responsibilities, then knowledge is there like liquid. But the air part is very, very important, because without the air part, you will face a problem of indigestion. Without the air part, you will face a problem of incompleteness in your heart, the vacuum, because you are not getting the satisfaction of a digested food. This air part is compared in Ayurveda as the meditation part, the part where you connect with the holy name,
to connect with the mantra which we will teach you, right? So meditation part is very, very important. It is the one-fourth part, but it is the most powerful part of your daily life. If you want to have a fulfilled and very powerful life filled with energy, you must have this part of meditation. So what my friend Kinshuk and I have decided that for boys, we are going to divide all of you into some groups where you will be, we will help you to develop the meditation, right? और इसके लिए एसोसिएशन चाहिए ही चाहिए. बिना संग के इट्स नॉट पॉसिबल. कहते हैं जैसा संग वैसा संग. तो हम आपको एसोसिएशन प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप डिटर्मिनेटली होके कर सकते हैं, है ना? टेक दिस अप एज अ 21 day चैलेंज. सम आर डूइंग इट. यू ऑल्सो ट्राई इट. ट्राई करके देखो. You yourself will experience. And I have been doing this meditation for more than 7 to 8 years. Every morning I connect with my identity. There is not a single day which passes by when I'm not connecting with my identity. And every day has been very beautiful. It has opened up new ways of reality. It has opened new doors of opportunity and filled my life with higher purpose and contribution to the world, which I'm trying to somehow make by mercy of God. So remember that this example of Ayurveda, meditation is a very crucial part. Okay. Okay. Any other announcements which are to be made, Kinshuk? Then maybe we can take questions if the students want. No problem. Hmm? No problem. Okay, so yes, my dear friends, so nice to thank you so much for your patience. We'll have the next session also, maybe in online mode because you must celebrate Diwali also, and I wish you a very happy Diwali and the festivals with your parents, with your relatives. You do it, and thank you so much for this time, and hope you learned something, right? And this Bhagavad Gita, we will teach you practical way of living the Gita. Just stay connected. Make this a group. This Dhira society is not just meant for making the numbers in the society, which other societies do. It's meant to transform the life of each one of you. So pin this group in your WhatsApp whenever we post an update, so that we don't have to individually contact you. You can be with us because हमारा एक ही purpose है. Like मेरा purpose एक ही है. Why I have started Dhira, why we have started Dhira, to help you, to help you to upgrade yourself. है ना? अपना फोन अपग्रेड करते हैं, लैपटॉप में अपना विंडोज भी अपग्रेड करते हैं, बट अपने आप को अपग्रेड करने का तरीका कोई है? कोई पढ़ाता है? एनी सब्जेक्ट इन योर बुक, इन योर कॉलेज, इन योर स्कूल? No one does that. And Bhagavad Gita is meant you to upgrade yourself, to upgrade your thinking, to upgrade your understanding, and to upgrade your life. अपने नाम के आगे 2.0 लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल केशव. I before coming to learn Bhagavad Gita, I was Keshav 1.0. After learning Bhagavad Gita, and I am Keshav 2.0, right? Upgraded version. ना, so अपने नाम के आगे आप लगा सकते हैं 2.0. जब आप इस नॉलेज को पढ़ें, समझें, रिविजिट करें, चर्न करें, अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चंस पूछें और अप्लाई करें. Difficulties हैं, takes time little bit, but we are there to assist you always. Okay, so if you have questions, you can unmute and ask. Otherwise, if you want, you can type also, right? Uh, because we are not in college, so Prasad is not there. I know it's a very sad thing, but we will cover it up. Don't worry. Whenever we will meet, we will see you. Yeah. So, any question, if anyone has, then they can ask me. So, Yes, Keshav. मुझे ये पूछना था कि ना आपने बताया आइडेंटिटी का कि सोल है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है? तो उसमें सर डिफरेंट है कि नहीं? लाइक जो हमारे सबके आइडेंटिटी होंगे, तो हम सब सेम आइडेंटिटी है या सब सबके आइडेंटिटी डिफरेंट है? बिकॉज सबकी पार्ट तो एक सोल है, दैट इज पार्ट ऑफ गॉड, आपने बताया. तो Yes. हमारे सबकी सोल डिफरेंट है या फिर मतलब क्या है? मतलब डिफरेंट है कैसे है, सेम है क्या, मतलब कैसे क्या है? Yes. So, in Shastras, it is said like this that uh,
Yeah, if anyone wants to leave, they can leave, or if they want to participate in the discussion and Q&A, then they can. No, so officially the session has ended. Just going for Q&A. So basically, the soul which we are, है ना, जो हम हैं, the soul is same in quality. That means in every person, every one of you, the soul is spiritual in nature. And by spiritual, I means it has three characteristics. Anything which is material has three characteristics, and anything, those who have questions, they can personally text me because I am in the group also. अगर किसी को लेट हो रहा है तो ठीक है, COBG ग्रुप में मैं हूँ एडमिन, आप मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं कोई लेट हो रहा है तो, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। यस, तो मटेरियल चीज के तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं कि वो एक तो टेम्परेरी होती है, इट्स नॉट परमानेंट, नेवर। नेक्स्ट थिंग इज एनीथिंग विच इज मटेरियल is dead, is not conscious, and anything which is material cannot experience happiness or bliss. You agree with me, Keshav? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, the soul, thank you, Lakshmi, Hare Krishna. Similarly, the soul has three characteristics, which is Sat, Chit, and Anand. And this is the quality of the soul, that the soul is eternal, Bliss and knowledge. full of bliss. That means it can experience bliss. And next thing is it is not dead, it is conscious. It is conscious, aware. It is aware. But that does not mean that it has no individuality. Krishna says every soul is individual, every soul is unique, every soul has different likes, dislikes, a sense of individuality. That means आप हो, मैं हूं। आप और मैं कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन हम एक भी हैं कैसे, क्वालिटी वाइज, क्योंकि आप भी स्पिरिचुअल हो, यानी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भी हैं, क्योंकि आप सोल हैं। मैं भी सोल हूं, मेरे में भी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट इंडिविजुअली वी हैव डिफरेंट, Okay. इंडिविजुअलिटी इज देयर ऑलवेज, ठीक है। यूनिक है सर। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और था। यस। तो लाइक इतना सर, आपने बोला कि लाइक हमारा मेन पर्पस भगवान को, लाइक भगवान तक पहुंचना है, भगवान को लाइक लव करना बेसिकली। तो यस। उसमें सर इतना कॉम्प्लेक्स कैसे है, मतलब इतना, इतने सारे वेदास, इतनी सारी चीजें, इतनी क्यों, लाइक सिंपल प्रोसीजर क्यों नहीं है कि लाइक भगवान का नाम लिया या फिर कुछ ऐसा कुछ किया, तो मतलब इतना वो कॉम्प्लेक्स कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस वाज द सेम क्वेश्चन, राइट, व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट अष्टांग योगा। इतना कॉम्प्लेक्स यस सर। कैसा हो सकता है, भगवान को प्राप्त करने का तरीका इतना मुश्किल कैसे हो सकता है कि उल्टा लटकूंगा मैं तभी मुझे भगवान मिलेंगे। यस सर। मतलब जब तक मैं ध्यान, धारणा, समाधि, आसन, नियम, प्राणायाम तक ना पहुंचूं तक मैं नहीं लूंगा। So I was reading about one saint, and he's a very popular author of the Bhagavad Gita. I have the Bhagavad Gita with me, right? This is, you can see. Can you see this Bhagavad Gita? यस सर, सर आई कैन सी इट। So this is Bhagavad Gita as it is, and the author of this book, once he was asked, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, why is spirituality or God consciousness so difficult? And he answered very nicely. He said, God consciousness is simple for the simple, but difficult for the complex. For a person who is very simple, it's very easy. भगवान का नाम लेना है, नाम लेना कितना मुश्किल है, बहुत आसान है। नाम पुकारना है मुझे आपका, केशव, right? This is, if similarly, you just have to call out the name of God. Yes. और ये जो नॉलेज है भगवद गीता की, ये नॉलेज को अप्लाई करना सीखना है। ये नॉलेज बहुत मुश्किल नहीं है, बस हमारा नेचर बदला हुआ है। And you know the biggest problem why we are complex? Next, I ask this question to myself. Why we are complex today? हम इतने complex क्यों हैं? Because I found the answer that today in the world, the biggest problem
is not only the weapons of mass destruction, the missiles. No, the biggest problem is not the weapons of mass destruction. The biggest problem is the weapons of mass distraction. These weapons of mass distraction have made us so complex that we are not able to connect with our identity. Because in earlier era, in the Vedic era, everyone was aware their soul. They were aware. They did not had कि हमें जब तक reincarnation के 5,000 cases दिख जाएंगे तब हम मानेंगे. They were aware. Yes, there is a difference between dead body and a living body. Yes, the soul has gone. They knew. Yes, there is God. They need not have a session on the discovering the mastermind. You know, they need not have the session on discovering the mastermind. They were aware. Yes, there is person. There is an intelligence. You can understand. So it's simple for the simple. And believe me, जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा भगवद गीता, by every chapter I will be teaching you, you will say ये तो एकदम logical है. It's very logical. It's nothing religious. It's nothing biased. It's nothing forced, pressurized. Therefore, it is said that God consciousness is the natural state of living entity. The living entity, the souls, it is very natural for us to look for God. It is very natural. We just don't have become simple. We have made ourselves complex, and we are just uncovering the layers of these complexities. So हम जब meditation कर रहे हैं और हम association में आ रहे हैं ना, तो हम इन layers को remove कर रहे हैं धीरे-धीरे. ऐसा. Okay, sir. Yeah. Very nice question. Even I asked this question to myself. Thank you for that question. Thank you, sir. Okay, yes, my friends. Aditya, you want to say something? No, sir. Okay, okay. I hope any other question anyone has? Meg, you want to ask a question? How do we know that there is a God? Okay. How do you know that there is a God? Okay, okay. Very easy. There is a God or not. Okay. Tell me, Mehak, if you're listening there, just tell me, when you bought your phone, जब आपने अपना पहला फोन खरीदा था, were you convinced that this phone came out of itself, or there must be a company that manufactured it? There must be, right? Right? ऐसा ही था. Yes. So you were convinced that वो कंपनी नहीं बनाया होगा, उस कंपनी से ही खरीदेंगे, right? Similarly, when you see everything around you, you can see anything. आपके घर पे आसपास जो कुछ भी है अभी राइट नाउ करंटली, पंखा है, टेबल है, कुछ भी है, हर चीज के पीछे आप एक पर्सन तक पहुंच सकते हो अगर आप उसको क्या करो, उसको रिग्रेशन वे में जाओ. टेबल को मैन्युफैक्चर करने वाला कोई कारपेंटर है, ठीक है. देन उसके बाद पंखा बनाने वाला इंजीनियर है. ये लैपटॉप जहां से मैं बात कर रहा हूँ, इसके पीछे भी पर्सन है. लेकिन जब बात आती है कि ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से आए, तब कोई नहीं. Isn't this kind of a very unusual thing कि हमारे पास आंखों के सामने हर चीज के पीछे एक इंटेलिजेंस दिख रही है, लेकिन हम एंड में बस उस इंटेलिजेंस को मिस कर देते हैं. Shouldn't there be a person behind this if every other thing has a person? Or can we quote any example where there is not a person behind that? ऐसा कोई एग्जांपल है, कोई क्रिएशन है ऐसी, कोई किसी चीज का मैन्युफैक्चरर है जहां पे पीछे कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है? इवन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स, आईआरसीटीसी जिसमें आप बुकिंग करते हैं, जो ऑटोमेटिक चलते हैं, उसको ऑटोमेटिक बनाने वाला एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. रोबोट्स को ऑटोमेटिक बनाने वाले इंजीनियर. तो हु इज द इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स? जिसके अरेंजमेंट से ऑब्वियसली उस इंजीनियर को जरूरत नहीं है कि खुद आके जब तक वो तार जोड़ेगा तब चलेगा यूनिवर्स. उस इंजीनियर के अरेंजमेंट से यूनिवर्स चल रहा है.
which is appearing to be like automatic, और हम क्या कहते हैं वो नेचर चला रही है, बट वो नेचर किसकी है, उसको ऑटोमेटिक बनाने वाला कौन है? क्योंकि हर चीज जो ऑटोमेटिक चल रही है उसके पीछे तो कोई है. Therefore I say always, ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है, it requires much greater faith to not believe in God than to believe in God. भगवान पे विश्वास न रखने के लिए कहीं ज्यादा श्रद्धा चाहिए, कहीं ज्यादा फेथ चाहिए, क्योंकि आप अपने आसपास हर प्रूफ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि कोई है, लेकिन जैसे ही भगवान की बात आ रही है तब आप डिनाई कर दो कि नहीं, तब नहीं होगा. इसके लिए कहीं ज्यादा फेथ चाहिए, इसका मतलब आपने कुछ ज्यादा फेथ रखा. डज इट मेक सेंस, महक? Yes. Yeah, so you can read about Bhagavad Gita, come to the sessions of girls के अपने sessions हैं, connect with them. Good questions is good question. And yeah, just explore. We are not coming here to say, okay, accept Bhagavad Gita, accept God, accept that you are soul. We are just simply giving you the opportunity, explore. Just explore, okay, what's happening.